Thank you. So let's start. So in today's workshop, we will study about finite state machine, or also known as in short form FSM. So finite state machine, or simply as a state machine, is a mathematical model of computation used to design both computer programs and sequential logic circuits. It is a type of mathematical model which can be used to design any kind of problem, a real life problem or any computer program or a sequence or any kind of logic circuit. Um, the machine is in only one state at a time. So this finite state machine FSM has different kind of states, and also have some inputs, and it transit from one state to another, and from this we know how to solve a problem. So at a particular time it will be in only one state. Okay, and this state at which it is present is known as current state, and it can change from one state to another state depending on the input we will provide. FSM has a list of its state and the triggering condition, मतलब जो हम लोग input दे रहे हैं triggering condition for each transition. So let's see an example for an FSM. This is a real life example. After it, we will see some circuit example for FSM. So let's assume you have a house in which there are two rooms, and in each room there is a one light. In room 1 there's L2 light, and in room 2 there's a L3 light, and there is a kind of gallery, you can say, and this is L1, and at that gallery there is one light L1, and you have two buttons P1, push buttons P2 and P2. So okay, this is a door. So you, as an engineer, you have a problem to design a lighting system for this house. Okay, and the conditions are that if you enter in this house, when a person enters in this house, either he will press P1 or P2. Whichever button he will press, P1 or P2, the light L1 should be turned on. Then after L1 is turned on, he might go to this room, or he may go to this room. So if he press P1, then L1 should be turned off and L2 should be turned on. And if he press P2, then L3 should be turned on and L1 should be off. यहाँ पे लिखा हुआ है सब, ठीक है. Pressing another time, अब क्या हुआ, वो यहाँ पे मान लो कि वो L3 इस वाले रूम में आ गया है, उसने पहले P1 या P2 को एक दबाया, उससे L1 चालू हो गई, उसने दोबारा P2 दबाया तो उससे L1 बंद हो गई और L3 चालू हो गई. तो L3 चालू हो गई. अब क्या है कि अगर वो दोबारा P1 या P2 में से कोई भी बटन दबाता है तो L3 बंद हो जानी चाहिए. तो क्या होगा, सारी लाइट्स बंद हो जाएगी जैसी इनिशियल कंडीशन थी. सो ये मैंने एक इंटरनेट से लिया है, तो इसकी लिंक है यहाँ पे, तुम लोग देख सकते हो, और तुम्हें डिटेल में पढ़ना हो तो ठीक है. ये तुम्हें एक कंडीशन है, इसके लिए तुम्हें एक FSM डिज़ाइन करना है. तो ठीक है, डिज़ाइन करते हैं. किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, चैट वगैरह में या माइक ऑन करके. ठीक है, let's create an FSM for this. So we have, in an FSM there are two most important things: states, number of states, what are the states, and the second thing is inputs, what are the inputs. So we basically have 4 states. State 1, no lights are turned on. Initial state, सब lights off है. L1 turned on है,
जब कोई पर्सन एंटर करेगा रूम में, हॉल में, तो L1 टर्न ऑन होगी। फिर अगली कंडीशन है L2 टर्न ऑन हो या फिर L3 टर्न ऑन हो। ये डिपेंड करता है वो कौन से रूम में एंटर कर रहा है, उस हिसाब से लाइट ऑन ऑफ होगी। और हमारे पास दो इनपुट्स हैं, वी हैव टू इनपुट्स, P1 पुश बटन 1, पुश बटन 2। ठीक है, ये FSM है। पहले हम लोगों ने स्टेट्स बना लिए। ये हमारा इनिशियल स्टेट्स है, इसमें L1 L2 L3 तीनों ऑफ है, इसमें L3 ऑन है, इसमें L1 ऑन है, इसमें L2 ऑन है। ठीक है, ये हमारा स्टेट डायग्राम है, इसको समझते हैं हम। ये हमारा रूम है, ये हमारा रूम है। सो ओके, अभी मान लेते हैं अभी हम लोग इनिशियली सारी लाइट्स ऑफ हैं, हम लोग इस वाले स्टेट में। ओके, अब a person enters and he may press P1 और he may press P2। इन दोनों ही कंडीशन में L1 ऑन हो जाएगी हमारी। तो देखो ये एरे है, ये एरो है, और अगर P1 यहाँ पे मेरा इनपुट लिखा हुआ है, एरो के ऊपर मैंने इनपुट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर P1 प्रेस किया तो हमारी स्टेट कहाँ पे चली जाएगी, L1 में। अगर P2 प्रेस किया तो भी हमारी स्टेट L1 में चली जाएगी। ठीक है, अभी हम लोग L1 में। Now there are two conditions. Person may press P1 if he wants to enter in room L2, and he may press P2 if he wants to enter in this room L3 वाली light में। So if let's assume he press P1, तो P1 प्रेस किया वो इस वाले रूम में आ गया। If he press P1, then what will happen? L1 will be turned off and L2 will be turned on। तो हम इस वाले स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, अब इस स्टेट में आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास फिर से दो कंडीशन है, या तो वो P1 प्रेस करेगा या P2 प्रेस करेगा। दोनों ही कंडीशन में P1 या P2 कुछ भी प्रेस करे, हम लोगों ने इनिशियली बोला था कि अगर वो P1 या P2 कुछ भी प्रेस करता है तो हमें दोबारा इनिशियल कंडीशन में जाना है, यानी सारी लाइट्स ऑफ होनी है। तो एरो बना दिए, इनपुट्स लिख दिए। अब मान लेते हैं वो जब यहाँ पे था, जब L1 चल रही थी, तो उसने P2 प्रेस कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, ये वाली लाइट चालू हो जाएगी। तो हम लोग एरो बनाया, इस वाली स्टेट में आ गए, इनपुट है P2। अब यहाँ पे भी सेम कहानी है, या तो वो P1 दबाएगा या तो P2 दबाएगा। Either he will press P1 or he will press P2. In both cases, our next state will be initial state, in which all lights are off। ठीक है, अब देखो दो चीजें होती हैं FSM में। एक स्टेट डायग्राम होता है, FSM तुम लोगों को डिजिसम में पढ़ाया गया होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। तो मेन एम हमारा है कि वेरिलॉग कोड देखना है FSM का। तो ठीक है, there are two things, state diagram and state table. If you have one thing, state diagram or state table, you can make state diagram from state table or you can make state table from state diagram। तो ये स्टेट डायग्राम हम लोगों ने देख लिया कैसे बनाना है, एक प्रॉब्लम थी उसका स्टेट डायग्राम बना लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं इसको स्टेट टेबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टेट लिख लिए, यहाँ पे इनपुट लिख लिया, ये कॉलम है इनपुट का, ये कॉलम है नेक्स्ट स्टेट का। सो स्टेट हमारे चार हैं, तो देखो ये चार स्टेट हैं, नो लाइट, L1 टर्न ऑन, L2 टर्न ऑन, L3 टर्न ऑन। सॉरी। So if we are on a state in which no lights are turned on, this is the state. So there are two inputs, P1 and P2. In both inputs, our next state will be L1 turned on. तो अगर हमारा इनपुट P1 है या P2 है, इनपुट P1 हो सकता है या P2 हो सकता है, कुछ भी हो, हमारा नेक्स्ट स्टेट होगा L1 turned on। अगर हमारी L1 turned on है, अगर हम लोग इस स्टेट में, हमारे दो इनपुट हैं P1 और P2, P1 इनपुट, P2 इनपुट। अगर P1 हम लोगों ने प्रेस किया तो P1 हम लोगों ने प्रेस किया तो हम लोग देखो कहाँ जा रहे हैं, L2 में जा रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेट L2 हो गया। अगर P2 प्रेस किया तो हम लोग L3 में जा रहे हैं, L3, P2 प्रेस किया, L3 में जा रहे हैं। ऐसे ही L2 और L3 का है। L2 में अगर हम लोग हैं, L2 वाले स्टेट में हैं, if we press P1 or P2 we will go to the no lights turned on वाले state, and if we are in L3, if we press P1 or P2 we will again go to
no lights turned on state. So this is a small example to how to create a FSM. Okay. So okay, that was a real life example, you can say that. So now we will see a circuit example of this. Let's I am hoping that you know what is a sequence detector. A sequence detector, let's assume there is a bit of streams, there's a stream of binary bits, okay, and you have to detect a particular sequence in that series. So this can be done using a sequence detector. So we want to create a sequence detector for for detecting a sequence 1101. So let's see how we can create it. So okay, any sequence detector or in any FSM, usually it is started with a state which is an unknown state, you can say, or an ideal state, also known as ideal state. ठीक है, तो अभी हम लोग मानते हैं हम लोग आइडियल स्टेट में, मतलब हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ इनपुट नहीं है, या फिर जो इनपुट है वो काम का नहीं है हमें. ठीक है, अब मैं ये कुछ एरोज यूज होंगे एफएसएम में. ये ये एरोज शो कर रहे हैं कि हमारा ट्रांजिशन हो रहा है, और इन एरोज के साथ ऐसे करके एक नंबर लिखा होगा 0/0. ठीक है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. इसका मतलब होता है इनपुट स्लैश आउटपुट. आउटपुट हमेशा हमारा 0 होगा जब तक हम लोग इस सीक्वेंस को डिटेक्ट नहीं कर रहे. When we will detect this sequence, our output will become 1. Okay, this is our output and this is our input. So okay, we have to create a sequence detector for 1101. Let's assume we are at an unknown state. If 0 comes, if our input is 0, this is an input, then what? We want that our first number should be 1, but we are getting a 0, so this is not of any use. So we will remain at that state, unknown state. If our input is 1, then we will move to our next. हम लोगों को 1 चाहिए, है ना, पहला बिट हम लोगों को 1 चाहिए, तो हम लोग एक नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे, और मैंने इसको डिनोट करने के लिए 1 लिखा है कि अभी हमारे पास 1 है. हम लोग यहाँ पे हैं. देखो, तुम किसी भी स्टेट में हो, तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो तुम्हारे पास 0 आएगा या 1 आएगा. तो हर स्टेट से देखो 2 ही एरो बाहर की साइड जाएंगे. ओनली 2 एरोज विल गो आउटसाइड. सो अननोन स्टेट में थे तो ये 2 एरो बाहर गए. ठीक है, अब नाउ अज्यूम यू आर एट अ स्टेट 1. इट मींस दैट यू हैव अ स्ट्रिंग 1. नाउ इफ 0 कम्स, तुम्हारे पास 1 है और 0 आ गया, तो तुम्हारा नंबर क्या हो गया? 1 0. लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? 1 1. तो तुम्हारी कुछ काम का नहीं है, तुम्हारा सब बिगड़ गया, तो तुम दोबारा अननोन स्टेट में चले जाओगे. ठीक है, मतलब तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है, फिर से स्टार्ट होगा सब. इनपुट 0 है, आउटपुट 0 रहेगा. लेट्स अज्यूम यू आर on one state and now you have a input 1. then तुम्हारा इनपुट क्या, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 1 1. तुम्हें चाहिए 1 1, तो तुम एक नया स्टेट बना दोगे 1 1 नाम से. आउटपुट अभी भी 0 रहेगा क्योंकि 1 1 0 1 अभी हम लोगों को नहीं मिला. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं. अब मान लो तुम 1 1 में हो, यहाँ पे भी तुम्हारे पास 2 ही कंडीशन, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा. इफ 0 कम्स, इफ 0 इज द इनपुट, देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेट 1 1 0, क्योंकि तुम्हें 1 1 0 1 चाहिए और 1 1 0 एक उसका पार्ट है, तो एक नए स्टेट में चलेगा 1 1 0 में. आउटपुट अभी भी 0 है क्योंकि हमें 1 1 0 1 नहीं मिला है. If you are in 1 1 state and you get an input 1, then you will have 3 ones, 1 1 1. So in that case you can ignore the first MSV 1. ठीक है, मतलब 3 1 है तो तुम 2 1 ले लो, तुम्हारा काम चल जाएगा.
तुम्हें 2 1 चाहिए ना यहाँ पे शुरुआत में, तो 3 में से एक 1 हटा दिया तो हम लोग अभी भी इसी स्टेट में रहेंगे। 3 1 थे, हम लोग 2 ही लेंगे, तो स्टिल अगर हमारा इनपुट 1 है तो भी हम लोग 1 1 वाले स्टेट में रहेंगे। ठीक है, ये फाइनल 1 1 0 है। तुम 1 1 0 में हो, अगर तुम्हारा इनपुट 1 आ गया तो तुम्हारे पास कौन सी स्ट्रिंग आ जाएगी? 1 1 0 1। तुम्हें यही चाहिए थी, तो देखो आउटपुट 1 हो गया। सिर्फ यहीं पे आउटपुट 1 हो रहा है, देखो, और कहीं नहीं होगा। अब देखो, लेकिन ठीक है, इनपुट 1 था, हमारी स्ट्रिंग हो गई 1 1 0 1, आउटपुट 1 हो गया, ठीक है। लेकिन ये एरो देखो कहाँ पे गया है? स्टेट 1 में। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये ओवरलैपिंग सीक्वेंस है। तो क्या होगा कि अगर 1 1 0 1 है और आगे एक और, हम लोग इस वाले 1 को एक और नेक्स्ट सीक्वेंस में भी ले सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इस वाले स्टेट में आ गए 1 सिंगल 1 वाले में। अगर हमारा इनपुट 0 है तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 0 0। ये हमारे कुछ काम का नहीं है, तो हम लोग फिर अननोन स्टेट में चले जाएंगे। हेलो भैया, sorry to interrupt. भैया, I don't know हाँ, Hindi. Can you explain in English, भैया? ओके ओके, हाँ ठीक है, शुरुआत से करता हूँ। Okay, so let's assume you have to create a sequence detector for 1 1 0 1. So in any sequence detector or in any FSM, usually you will start from an state which is known as unknown state or ideal state. It means that you don't have anything which you want, like you don't have any part of this sequence. So okay, in any state you will have this representation is used to denote input slash output. It means that 0 is your input and output is your 0. Okay, you are in a state, you are in a state which is unknown. Now you will have two options. Either you will get an input of 0 or you will get an input of 1. If you get an input of 0, then you don't want 0 at starting. Okay, you want 1, so it is of no use. So again, you will be you will stay at unknown state. If you get an input 1, then you will move to a state single 1 state. Okay, if you are at the state of single 1 and you get one more 1, then you will move to the state of double 1. क्योंकि हमें, because we want two ones in our sequence. If you receive an input 0, this is input, this is output, this is input, this is output, this is output, this is input. Okay, this is a representation. If you are in single 1 state and you receive a 0, then it will become 1 0, and you don't want 1 0, you want 1 1. So you will move again, you will move back to the unknown state. Now if you are at 1 1, and again you will have two options. Either you will get a 0 or you will get a 1. If you get a 1, then you will stay at the same state, because 1 1 1 3 ones, we don't want 3 ones, but we can take 2 ones of that and we will remain at that state. Now if we get a 0, then we will move to the next state, which is named as 1 1 0, because 1 1 0 is a part of our sequence. Now we are at 1 1 0. Then if we receive 0, then our string will become 1 1 0 0. 1 1 0 0 is of no use because we want 1 1 0 1. So we will move to the unknown state. But if you get input as 1, then your string will become 1 1 0 1, and you want that, and you will give a output 1. You see here only the output is 1. At every other place output is 0. So in this way we can detect a sequence 1 1 0 1, and we can detect any sequence by creating a FSM. One more thing, after you get 1,
this string will become 1101, and you will move to a state of single one, because the last one of this sequence can be taken as the first one of the another sequence, and this is known as overlapping sequence. In question, it will be mentioned that the sequence is overlapping or non-overlapping. Okay, you have four states: unknown, single one, double one, zero. We will name these state using binary digits. We have four. We want to name four states, so we will use 2 bits. So this is a state 00, this is a state 01, this is a state 11, and this is a state 10. ये हम लोगों ने नेम कर, we have named this. Okay, this is a whole explanation. You can read after. Okay, now we have a state diagram. Now we will write a Verilog code for it. It's very simple. Look, you can also create a circuit for this, but for that you have to create a state table for that. This must be told you in DGSM workshops. So we don't want a circuit, we just want a Verilog code. So for Verilog code, we don't require a state table. We can directly write Verilog code by seeing the state diagram or by state table. Any one thing will work. So let's start writing a Verilog code. Starting by time scale. We have defined a time scale. 1 nanosecond is the time unit for the delay. Module defined. Sequence detector is the name of the module. Output is defined as register because we are using behavioral modeling, and LHS of that should be register. Output is O. Output is O. Input are Input are I, clock, and reset. I am defining a internal variable register type of 2 bits, and its name is state. You see here, I have defined state 00, 01, 11, 10. So this is a state, and this is of 2 bits. So I am using 0 to 1 for 2 bits. Now I am writing a behavioral code for this state diagram. This is the syntax: always @ positive edge. Positive edge, we are using positive edge triggered FSM, or negative edge of reset. Begin. Here we start our always block. So if our reset is 0, then we will reset our FSM. Our state will become 00 and output will become 0. Simple. But if our reset is not 0, it is 1, then what will happen? I am using a case statement here. You can use if else also. It will not make any difference, but case statement will be better. So okay, case state, we will check in which state our FSM is. If this is a representation type, 2 means our number is of 2 bits. B means our number is binary, and 00 is our number. So if our state is 00, this is our state, and if our input is 1, then here our state is 00, and if our input is 1, then we will move to the state 01, and output will be 0. State 01, output 0. Just जो दिख रहा है उसको define करते जाओ. Else, अगर हमारा input 0, if our input is 0, then state equal to 00. We will remain in the same state 00. If our input is 00, then we will remain in the same state 00. 00, output is still 0. If our state is 01, state 01 है, and our input is 1, then we will move to state 11. State Z is 01,
and our input is 1, then we will move to the next state, which is 1 1, and but our output will still be 0. Our output is 0. Else, if I is 0, then if I is 0, if our input is 0 and we are in this state and our input is 0, then we will move to state 0 0. We are in state 0 1, our input is 0, else then we will move to state 0 0, output is 0. If we are in 1 1, and our input is 1, we will remain at the same state. If our input is 0, we will move to the state 1 0. If input is 1, we will remain in 1 1, else we will move to 1 0 state. Now we are in 1 0 state, we are in this state, and our input is 1 1. You can see output is 1 and state is 0 1. We are in 1 0 state, input 1 hai, input is 1, then our state will become 0 1. State 0 1 ho gaya, state becomes 0 1 and output will become 1. This is the only case where our output is 1. It means that we have detected a sequence of 1 1 0 1. Else 0 hai, so we will move to the unknown state. So we have a Verilog code for we have a Verilog module for this. Now we want a Verilog test bench for our code. So test bench, same. First we will define a time scale. This is a module defined here. Then our output as wire type register I clock reset. Then we will instantiate our module which we have written earlier. Sequence detector, we will call it. I have given a UUT name. You can give any name. Output, input, initial begin. There are 3 initial blocks. You can see initial. These all 3 initial blocks will start at the same time, okay, at t equal to 0. So in first initial block, you can see that reset, I have initialized reset as 0, and after 2 nanoseconds of delay, I have made reset 1. In the second initial block, I have initialized clock and I as 0, clock and input as 0, and I have used a forever statement. It means that our clock will toggle at every 10 nanoseconds. So our clock will toggle at every 10 nanoseconds. It means that our time period of clock is 20 nanoseconds. So this is how you define a clock. And in the last initial block, I have given the inputs. Firstly, I initialize input as 0, and after 20 seconds or 20 nanoseconds of delay, I made I as 1. Then after another 20 seconds, 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1. So yeah, this is our input which is going. So okay, you can see that here 1 1 0 1. This is one input. So okay, so at this time your output should be 1. At this time your output should be 1. And again you see that the last one of this sequence 1101 is used as first one of another sequence 1101. So at this time also your output will be 1. Let's see the test result. And at last I have used a delay of 240 nanoseconds and terminate my program. So you can see that this is a simulation result. You can see that our simulation is terminated after 240 nanoseconds because of this statement. Now we will see our clock. You can see that a clock is toggling at every 10 nanoseconds. So time period is 20 nanoseconds. Reset, you can see that reset is 1 forever after 2 nanoseconds of delay. Input is given after every 20 nanosecond delay. I am giving input. So you can see that after 20 nanoseconds, sometime input is changing, sometime it is not changing because I have given it that way. So let's see. After 20
20, 40, 60, 80, 100, 120. You see, after 120 seconds, our sequence 1101 is detected. So after 120 seconds, our output should be 1. ठीक है? Our output will be 0 in starting because we have not detected 1101 sequence. But after 120 nanoseconds, we have detected 1101 sequence. But you see, our output is becoming 1 at 130 nanoseconds. Why? Because this state diagram is a positive edge state diagram, and the next positive edge is coming at 130 seconds. So at 130 seconds, our output will get 1. And after 20 seconds or 20 nanoseconds, that is the time period of clock, it will again become 0 because we are not receiving the sequence 1101. And after here 120, 140, 160, 180. After 180 seconds, we again receive a sequence 1101. So after 180 nanoseconds, our output should again become 1. But as it is a positive edge and the positive edge is coming at 190 seconds, so at 190 seconds, our output will become 1. And after 20 seconds, which is the clock period time period of clock, our output will become 0 again. So ठीक है. So this was all we want to tell you today. छोटी सी वर्कशॉप थी आज. 1 मिनट. निशांत. हाँ तुझे कुछ बताना है? नहीं, so you have learnt about FSM, so you'll need time to get familiar with all these concepts. तो पहले जो हम लोग जो भी वर्कशॉप्स में उससे रिलेटेड कोई अगर डाउट्स हो या फिर जो असाइनमेंट दिए थे उसमें कुछ डाउट्स हो तो यू कैन आस्क. अच्छा एक चीज, ये आयुष तुमने पूछा है कि हम लोग ऐसे क्यों डिफाइन करते हैं, तो क्या पूछना चाहते हो? 2 कॉमा V01 ऐसे क्यों डिफाइन करते हैं ना? सीधे 01 क्यों नहीं डिफाइन कर रहे हैं? सीधे 01 कर दिया तो यूजुअली 2 प्राइम B01 लिख देते उसे यूजुअली. हाँ तो देखो, अगर तुम 01 सीधे डिफाइन कर दोगे तो क्या होगा, वो डेसिमल में 1 ले लेगा उससे. सही कह रहा हूँ? स्लाइड में 01 दिया था. कौन सी, अभी वाली? हाँ आज वाली. कहाँ पे? स्टेट एरो 01. इस वाली में? हाँ केस वाली लाइन में बिगिन स्टेट एरो 01. अच्छा. आई थिंक डेसिमल से भी फर्क नहीं पड़ा. हाँ शायद नहीं पढ़ता. ठीक है, मतलब वेरीलॉग में यूजुअली ऐसे ही डिफाइन करते हैं. अच्छी प्रैक्टिस है. ये मैंने गलती कर दी डायरेक्ट डिफाइन करके. मतलब गलती क्या, मतलब नहीं करना चाहिए था. यूजुअली ऐसे ही डिफाइन करते हैं वेरीलॉग में. और कोई डाउट किसी को? उसको देखो, उसको डेसिमल में डिफाइन करने से कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग स्टेट वाला वैल्यू को कहीं यूज नहीं कर रहे हैं. अगर किसी कैलकुलेशन में इफ यू हैव यूज्ड द स्टेट वैल्यू तो उसमें वो डेसिमल के जैसा काउंट होता. हियर वी आर जस्ट राइटिंग द स्टेट, मींस जस्ट वी आर डिनोटिंग द स्टेट यूजिंग द नंबर. सो उसको 11 को तुम 11 रीड करो या फिर 11 को 3 रीड करो, वो एक ही चीज हुआ. ओके भैया. असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया था. ठीक है, 1 मिनट. काफी सिंपल क्वेश्चन है. मतलब मैं अभी कर रहा था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन सिंपल है. मैंने वेरिएबल का नाम गलत लिख दिया था बस, और कुछ नहीं है. सिंपल. हाँ तो ठीक है.
दिख रहा है ना क्वेश्चन? हाँ जी। तो क्या समझिए हैं कुछ खास चीज? स्टार्ट ही कहाँ से करना है वही समझ में नहीं आया। ठीक है, एक दिख रहा है तो आई थिंक मतलब इसी तरह, बट नहीं समझ में आया क्या? कैसे। दिख रहा है लैच बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा वो नहीं समझ में आया। ठीक है, गेट लेवल मॉडलिंग यूज करनी है। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें सिंपल नैंड गेट्स हैं तो नैंड गेट यूज करना है। तो सिंपल कुछ नहीं है, तुम्हें 6 गेट्स दिख रहे हैं, यू कैन सी 6 गेट्स, राइट? यस भैया। You will define these 6 gates and just give the input and output of each gate. इसका कुछ शॉर्ट नहीं होगा मतलब? इससे ज्यादा शॉर्ट क्या करोगे? ओके, मतलब कुछ बन जाएगा या अपने आप से सॉल्व हो जाएगा या कुछ? हाँ, ये एक्चुअली डी फ्लिप फ्लॉप का वो है सर्किट। ठीक है, तो कौन सा फ्लॉप? डी फ्लिप फ्लॉप, डी। ठीक है, तो देखो इतना छोटा सा कोड है, बस 6 लाइन का। एस एंड आर 2 वायर है, एस एंड आर, एंड W1 एंड W2 2 वायर और लगेंगे, तो उनको डिफाइन कर दिया है। उसके बाद नैंड गेट डिफाइन कर दिए 6, G1 G2 G3 G4 G5 G6, जो नाम देना हो दे दो। उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिफाइन कर दिए, जैसे मान लेते हैं ये G3 है, ये G1 है, ये G2 है, ये G3 है, ये G3 है, G4 है, ये G5 है, ये G6 है, तो ये G3 है। ओके, G3 is an AND gate, so I have defined an AND gate given a name, and output is R, output R है, R डिफाइन किया। यस भैया, वैसे कर लूंगा सब। बस सिंपल है, और एक टेस्ट बेंच लिख देना। और किसी को डाउट है डी किसी फ्लिप क्वेश्चन? बनेगा वो? हाँ, टी फ्लिप फ्लॉप बनेगा। सिमुलेशन दिखा सकते हैं तुम्हें। ये जाइलिंक्स का ISE है। तुम लोग विवाडो यूज कर रहे हो, दोनों सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दिखने में अलग है, सेम कंपनी है। ये इनिशियली, एक मिनट, ये मेरी टेस्ट बेंच ये रही। इसमें मैंने क्लॉक डिफाइन की है 5 नैनो सेकेंड्स की। तो ठीक है, तो इनिशियली 5 नैनो सेकेंड्स तक ये इनिशियलाइज नहीं है, तो ये गलत वैल्यू देगा, क्यू एंड क्यू बार। इस सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये एक टी फ्लिप फ्लॉप है, क्यू एंड क्यू बार our are our outputs। ठीक है, D is our input, you can see that till 10 nanosecond it is 0, our output is also 0, after 10 nanoseconds it became 1, so our output should also become 1, लेकिन this is a positive edge T flip flop, so here is our positive edge, so after 15 nanoseconds our output is becoming 1। यहाँ पे फिर डी फ्लिप फ्लॉप, डी इनपुट डी यहाँ पे 0 हो गया, तो अगली पॉजिटिव एज में ये फिर से 0 हो गया। बस ऐसे ही है, सिंपल डी फ्लिप फ्लॉप का है। ओके भैया। करके देखना। एक देखो, वेरीलॉग में जैसे सी प्रोग्राम होता है, नॉर्मल रहता है, तुम कोड लिखते तो सिर्फ रन कर देते हो, चल जाता है बढ़िया। वेरीलॉग भी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा ये रहता है टेस्ट बेंच अलग से लिखनी पड़ती है, 2-3 फाइल्स रहती हैं, तो 1-2 बार कोड लिखोगे काफी समझ आ जाएगा, इजी है काफी, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ भी पूछ लो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई डाउट हो, वेरीलॉग में, इवेंट से लेके कुछ डाउट हो,
कुछ जो लास्ट पूछना क्वेश्चन में जो डी फ्लिप फ्लॉप था, मतलब उसका एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे हुआ डी फ्लिप फ्लॉप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स? ये हाँ, ये सर्किट ये डी फ्लिप फ्लॉप कैसे हुआ? क्या? देखो, मॉरिस मानो पढ़ोगे उसमें, सुनो, तुमने डी लैच का सर्किट देखा होगा। हाँ, वो ये एक में डी जाता है, एक में नॉट डी जाता है, वो बाकी तो आरएस फ्लिप बन जाता, आरएस हाँ, लैच। वही जैसे ये डी लैच है ना, ठीक है, इनेबल वगैरह इग्नोर मारो, ओके। जैसे ये उठा दो, ठीक है, ये डी लैच है, ठीक है। तुम्हें पता होगा कि एक फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए 2 लैचेस लेते हैं और उन्हें मास्टर स्लेव वाला कॉन्सेप्ट सुना होगा ना। हाँ, ठीक है, नहीं सुना हो तो मॉरिस, देखो मैं बार बार मॉरिस मानो का नाम लेता रहता हूँ, तुम्हें लगता होगा और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, सच्ची में कुछ नहीं है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब मॉरिस मानो, ठीक है। मॉरिस मानो में बढ़िया पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, मास्टर स्लेव वगैरह वो वाला देख लेना, काम आता है। तो ठीक है, तुम ये एक लैच है और एक और लैच लोगे, उसको मास्टर स्लेव से कनेक्ट कर दोगे तो तुम्हारा डी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। देखो यहाँ पे खुद आ गया वो वाला सर्किट, ठीक है। तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, तो उसमें जैसे देखो तुम, इसमें 1 2 3 4 गेट्स हैं, और 4 गेट्स और 8 गेट्स लगेंगे तुम्हारे, राइट। ये नॉट गेट हटा दो अभी, तो 8 गेट लगेंगे। इसमें देखो 6 गेट में काम हो रहा है, तो उसको सिंप्लीफाई किया गया है उस सर्किट को, बस, और कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू। निशांत, कुछ और ऐड करना है इसमें? नहीं, ठीक है। इन लोगों का कुछ डाउट है तो कहना। बाकी तुम देख सकते हो कि वैल्यूज रख रख के कि ये टी फ्लिप फ्लॉप की तरह काम कर रहा है कि नहीं, या सबसे बढ़िया वेरिलॉग से ही देखो, इजी है। और सेकंड क्वेश्चन तो एक बार क्या, डी फ्लिप फ्लॉप का जो सिमुलेशन था, इसमें क्या? इसका सिमुलेशन था ना, एक हाँ, वेवफॉर्म जो था। हाँ, क्या आपकी आवाज कटी थी बीच में, कुछ बोल रहा है? नहीं, वही वही दिख रहा है ना कि इट इज वर्किंग एज अ डी फ्लिप फ्लॉप एंड हाँ, द वही मास्टर स्लेव की बात है। द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस सर्किट एंड द नॉर्मल डी फ्लिप फ्लॉप दैट वी यूज, उसमें कि द नॉर्मल डी फ्लिप फ्लॉप होता है which is constructed using the 4 gates for 2 gates for तेरी आवाज कट रही है कि सिर्फ मुझे we need a clock सुनाई and नहीं दे रहा है? हेलो, हाँ या हेलो, आ रही है आवाज? हाँ, हाँ, अब आ रही है। So why just I was explaining that the circuit that we had given in question 1, that is elaborated version of this master slave. Master slave is generally used to provide edge triggering effect to a flip flop, because in whatever circuit that we use a flip flop, that circuit is triggered using clock, and in all the triggering we take a edge triggering, because level triggering leads to different problems. वो पढ़ोगे आगे, उसमें रेस अराउंड कंडीशंस आता है और बहुत सारे कंडीशंस आता है जिसमें लेवल ट्रिगर रहने पे प्रॉब्लम होता है. So for that we use this kind of a D flip flop. So that is actually the strength of Verilog, that whenever you have a doubt, you can simply model the circuit and then see the waveform, and so you will be able to know the exact working of the circuit. या अच्छा, सेकंड वाला प्रॉब्लम सब लोग वीडियोस देखे थे जो रेफरेंस लिंक दिया गया था? मुझे किया नहीं अब यार
किया नहीं लेकिन देखा था, डिजिसम वाला ही। काउंटर्स वगैरह तो बताए होंगे ना डिजिट्स वाले। हाँ 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 भैया लास्ट हाँ ईयर। तो ठीक है तब। तो कुछ समझ आया कि नहीं? देखो ऑलमोस्ट हो गया खत्म। ठीक है, अब कुछ कुछ हम लोग एक्स्ट्रा देते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो समझ आया कि नहीं कुछ? समझ तो आया आ थोड़ा गया बहुत। भैया। देखो मेन थोड़े डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट आएंगे, आते होंगे, तो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए वर्कशॉप भी जल्दी ख़त्म हो गई हम लोगों की। ठीक है, तो बस एक दो कोड लिखो, जैसे यहीं से स्टार्ट कर सकते हो इसी असाइनमेंट से। डी फ्लिप फ्लॉप वगैरह के सिंपल सिंपल कोड एक दो बार सिमुलेशन रन करो, हो जाएगा। और कुछ कोई डाउट? वो वेरिलॉग वाली बुक कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए? देखो अगर कुछ नहीं आता, जैसे निशांत बताएगा अच्छे से, क्योंकि वो लेके आया था वो, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैंने अभी रीड की थी एक दो महीने पहले, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। हाँ तो डिपेंड करता है कि तो यू आर इन सेकंड ईयर ना? हाँ भैया। हाँ तो सेकंड ईयर के तो देखो तुम लोग का तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल ही रहा होगा। तो अभी मैं बोलूँगा कि एट प्रेजेंट यू पे मोर अटेंशन ऑन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक, और वेरिलॉग वाला जो बुक है उसको एज सच अभी उतना टाइम देकर पढ़ने का जरूरत नहीं है। वंस यू आर फेमिलियर विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, देन उसके बाद से यू कैन जस्ट गो ऑन जस्ट लाइक रीडिंग 5 to 10 पेजेस एवरी डे। उसको ऐसे हेडेक लेके नहीं करना है, जस्ट जैसे एज अ स्टोरी बुक उसको 10 पेज 15 पेज ऐसे करके यू कैन कंप्लीट। एंड by the month of April we'll be giving the problem statement, so by then you can kind of set up or you can plan that by the month of April you should be able to finish that behavioral modeling part. So I think that is chapter 7. So up till chapter 7 you should finish till the month of April. ओके भैया। और कुछ डाउट्स नहीं है तो उज्जवल फिर फीस दे सकते हैं तब। किसी को पूछना है और तो पूछ लो, फिर वरना क्विज शुरू कर रहे हैं हम लोग। एक दो चीज जैसे 55 पे स्टार्ट करें निशांत? हाँ ठीक है। हाँ तो 55 पे स्टार्ट करेंगे हम लोग क्विज, 9:55 पे। 10 तक का टाइम रहेगा। ठीक है, 15 मिनट्स काफ़ी हैं, 10 क्वेश्चन है, एमसीक्यूज टाइप है, बिल्कुल मतलब पढ़ के टिक मारने वाले हैं। ठीक है, और चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोफेसर्स नहीं है हम लोग, ना तुम्हारा कोई कोर्स का क्रेडिट जा रहा है इसमें, सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है क्विज, तो कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जो आता है करो। का डिसेंट सा वेटेज है उसमें भी, मेनली अटेंडेंस, मतलब तुमने दी है इसका देखेंगे हम लोग, बाकी जो पीएस होगा उसी का मेन वेटेज आएगा। तो ठीक है, 15 मिनट्स हैं। एंड इस क्विज में जब सबमिट करोगे तो शायद कुछ कैप्चर वेरिफिकेशन वगैरह आता है निशांत? तेरे में आया था? नहीं मेरे में तो नहीं आता। तो ठीक है, मैंने की थी जब, तो मेरे में आया था, तो उस हिसाब से करना, 30 सेकंड्स पहले ही सबमिट कर देना, बाकी तो ठीक ही है। तो 3 मिनट और है, कुछ डाउट हो तो पूछ लो, 55 पे मैं लिंक डालूंगा। अटेंडेंस की भी वेटेज है? नहीं नहीं, मतलब सिर्फ ऐसे नहीं है, अटेंडेंस की वेटेज नहीं।